Hello everyone, welcome back to another video. Finally, after a very long time, I'm back on YouTube. I hope you all missed me, but अगर नहीं किया तो करना चाहिए था. But अगर किया है तो thank you very much for missing me. Finally, I am back and I will try to be consistent this time. I will not run away just the way you run away from your problems. एनीवेज हम ये बेकार के जोक्स मारना बंद करेंगे एंड वी विल गेट बैक. हम कहीं गए ही नहीं थे एक्चुअली. एनीवेज द मोमेंट आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग everything around me starts making noise. Anyways, we will ignore the fact that there's a dog barking outside and you can hear it too. We'll ignore it and we will focus on the video. In this video, I will be clearing all your doubts related to journalism and journalism in LSR. Okay, so in the last few months, I have received a lot of comments, a lot of DMs, and everything asking questions about journalism. How is it in LSR? Career opportunity, job opportunity, placements, internships. एंड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वॉज कि क्या डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी जर्नलिज्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट विद बैकग्राउंड इन साइंस कैन ऑल्सो परस्यू जर्नलिज्म क्वेश्चन मार्क. So I will be answering all your questions, all your doubts, and I will be highlighting a few of the comments and DMs ताकि आपको actually believe हो कि okay these were genuine questions. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कॉलेज जर्नलिज्म के लिए कैसा है. सो लेट मी टेल यू कि इट्स अ रियली नाइस कॉलेज एंड आपको बहुत ही एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. एंड फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग यू कैन चेक आउट दिस वीडियो. यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इज़ द एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं जर्नलिज्म में इन LSR. बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है. द कोर्सेज, द फैकल्टी एंड द प्रैक्टिकल्स आर रियली अमेजिंग एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रॉम दिस कोर्स. एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन डूइंग जर्नलिज्म एंड इज़ inclined towards journalism and mass communication, you definitely should target LSR's journalism. The second question was, hello Didi, I am a PCB student of class 12th and want to pursue BA in English and join media industry science. Is it possible? So definitely it is possible. आप अगर okay, so let's be very clear. There was this another DM जिसमें मुझसे एक student ने they had asked me about they have science as their higher secondary course and can they pursue journalism and can they go in ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज. सो क्या ये उनके लिए ये ट्रांजिशन विल इट बी ईजी, स्मूथ, और इज़ इट गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट एंड विल दे फाइंड इट एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल टू अडेप्ट टू द सिचुएशन. बट लेट मी टेल यू गाइस कि if you are a science student and you want to transition into a course like journalism, it is not going to be that difficult because journalism is mostly it is not like any other humanities वाले जो courses है हमारे, the नॉर्मल आर्ट्स वाले जो कोर्सेज है लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलोसफी, इन सारे सब्जेक्ट्स की तरह जर्नलिज्म नहीं है. इट इज़ नॉट only theory, but these practicals are more technical in terms of, for example, if you have a subject like broadcast production, so you will have practicals like in which you will have to make documentaries, you will have to make a short film or a music video or just a random edit or something. So these type of practical opportunities आपको मिलेंगी. And doing these, if you are into technicalities and you know handling softwares and you can do good in that, so it is going to be easy. But if you are not somebody who is very handy with managing your laptops or computers or those stuffs, or you find it difficult, so it might be a little difficult for you, but it's not that difficult क्योंकि
you will, with time eventually you will learn how to use everything. And कुछ बहुत extreme नहीं होता, it's normal. And if you are somebody who wants to go into video editing or audio editing or something like that, then you have ample of duration to learn all of it. वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू क्लियर इज़ दैट कि इट इज़ नॉट दैट कि फैकल्टी आपको बिठा करके सिखाए कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, ये सारे टूल्स होते हैं, ये दे विल जस्ट टीच यू एन ओवरव्यू एंड एवरीथिंग. इट इज़ ऑन you how you use it, how you learn it, and how you implement it actually. For example, if I do any sort of editing, it is not that कि मेरी faculty ने मुझे बिठा करके सिखाया है कि बेटा this is the keyframe, this is how you do the overlaying, and this is how you adjust the audio, this is how you do this is how you do that, this is how you align things and everything, this should be the frame, this should be the so and so. So it is not like that. It is that कि उन्होंने हमें theoretical part पढ़ा दिया and they gave us the practicals, and it is on us कि how are we going to implement it. So you can do that as well. So it is not very difficult to transition from a science or commerce background into journalism, क्योंकि journalism is more of a technical subject rather than the hardcore theoretical subject. But in fact, let me be very honest with you कि इसमें भी बहुत सारे what do I say, you have theoretical part as well. For example, there are so many amazing subjects. For example, you have media, industry and management, and you have development communication, you have research methodology, and these subjects are exceptionally, I would say they are more into your theory parts and everything. But studying those subjects will give you a lot of knowledge, or wider range of understanding, and develop your thinking. And in subjects ko padh ke you will learn more about media and how an ethical media should actually function, and what should be the roles and responsibilities. There was the subject ethics and laws related to media and everything. So usme humne laws and ethical norms and everything which a media industry and a journalist or a reporter or somebody who is into media, be it the traditional ones or the digital formats or the new media and everything, they should follow some unwritten rules and some written rules, which will not violate the privacy or the, what do we say, confidentiality of any concerned personality. So ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं. And apart from this, फी स्ट्रक्चर के बारे में भी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर फॉर LSR जर्नलिज्म. द पर्टिकुलर कोर्स जर्नलिज्म का फीस इज़ फॉर ऑल द 3 years. More or less it's around 30,000. I mean somewhere around 29,000, then 28, 27, ऐसे 30,000 आप मान सकते हो कि एक साल का 30,000 is the fee for 1 year. It's not monthly fee, it's an yearly fee जो आपको one time payment करना होता है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब आपका एडमिशन हो जाएगा इन फर्स्ट ईयर, आफ्टर यू गेट योर CUT रिजल्ट्स एंड ऑल दोज काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट्स एंड एवरीथिंग, व्हेन यू एक्सेप्ट योर सीट यू विल हैव टू पे दैट अमाउंट, एंड देन दैट्स इट. एंड उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पेमेंट होती है वो आपके नेक्स्ट ईयर में होती है. इट्स समवेयर अराउंड अगस्त सितंबर के टाइम पे पेमेंट होती है, एंड यू गेट लाइक गुड ड्यूरेशन जिसमें आपको फ़ी पेमेंट के लिए टाइम मिलता है समवेयर अराउंड 1 month. समटाइम्स इट्स अराउंड 15 days और 20 days, और वो बाद में एक्सटेंड भी होता है, तो इट गोज़ अराउंड 1 month. एंड इफ़ यू इवन कैन नॉट make it and if you cannot pay the by any chance आप वो उस month मतलब उस duration में fee pay नहीं कर पाते हो, then they also extend the date with some amount of late fee. And late fee is not like कि आपको 30,000 fees थी तो you will have to pay somewhere around 3,000, 4,000, 5,000, ऐसा कुछ नहीं होता लेट फी में. लेट फी में 500-600 तक ही बस लगाते हैं, तो आप कर सकते हो थोड़ा लेट फी तक मैनेज if you like have any sort of issue with, you understand what I'm saying. Yeah. Then again in third year आपको वैसे ही पे करना पड़ता है, and then fourth year का मुझे नहीं पता है because I'm not doing fourth year by the way you guys. And also yeah, so before you guys ask me what am I doing after
graduating? Am I going to pursue fourth year, or what am I doing, or what am I planning to do, or am I going to uh, do some masters or anything? Do let me know if I should reveal it कि मैं क्या कर रही हूँ अभी. Anyways, I think that is it for this video. Let me know if you have any more questions. I will definitely love to answer those questions, because I want to be consistent on YouTube this time, and I will try to be. I hope you guys give me concrete, opportunity जिस पे मैं videos बना सकूँ, and I be consistent. I will try to be. So for now, bye bye.